Okay, students, so let's get started with October November 2022 IGCSE Physics Paper 2 Variant 1 45 minutes का paper. This is an MCQs based paper, so let's get started with it. थोड़ा सा zoom in करते हैं. Which instrument या which measuring instrument is used to measure the diameter of a thin metal wire? हमेशा आपने याद रखना है जब भी डायमीटर की बात हो रही है, जब भी किसी थिन वायर की बात हो रही है, स्मॉल मेजरमेंट की बात हो रही है, यू विल ऑलवेज यूज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. आगे बढ़ते हैं. अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. ओके, so you are starting from rest. The table shows the reading from its speedometer every 10 seconds. ठीक है. टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपकी स्पीड 0 है. आफ्टर 10 सेकेंड योर स्पीड बिकम्स 4. तो बेटा टाइम आपका 10 सेकेंड से प्लस हुआ, आपकी स्पीड 4 सेकेंड से प्लस हुई. देन आफ्टर फर्दर 10 सेकेंड्स आपकी स्पीड फर्दर प्लस 4 हो गई. देन आफ्टर फर्दर 10 सेकेंड्स आपकी स्पीड फर्दर प्लस 4 हो गई. कैन यू रियलाइज आफ्टर एवरी 10 सेकेंड आपकी स्पीड प्लस 4 हो रही है. आफ्टर 10 सेकेंड स्पीड प्लस 4, आफ्टर 10 सेकेंड स्पीड प्लस 4. सो फ्रॉम 0 to 30 seconds you are moving with नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अच्छा जी, आफ्टर 30 सेकेंड्स क्या हो रहा है, कैन यू रियलाइज? आपकी स्पीड 12 है, 12 है, 12 है, 12 ही रह रही है. आफ्टर 30 सेकेंड आपकी स्पीड क्या हो रही है बच्चा? कांस्टेंट हो रही है आपकी स्पीड. डी इज योर आंसर. आगे बढ़ते. Which property of an object is the consequence of a gravitational field acting on it? The weight of the object. D is your answer. आगे बढ़ते. The diagram shows the dimension of a solid rectangular block of metal of mass m. Which expression is used to calculate the density of the metal? Density का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? Density is equals to mass over volume. मुझे बताओ मास का क्या सिंबल है? m. वॉल्यूम का क्या सिंबल है? p. q. r. b is your answer. आगे बढ़ते हैं बेटा. A wheelbarrow has a weight of 140 न्यूटन. अच्छा जी, ये वेट लग रहा है यहाँ पे 140 न्यूटन. Which vertical force is needed to support the wheelbarrow in the position shown? बेटा लेट्स assume this is your pivot. हम assume कर लेते हैं कि ये आपका pivot है. This weight is generating a clockwise movement. Can you calculate this clockwise movement बेटा? क्या आप ये clockwise movement निकाल सकते हो? जी बिल्कुल. This force of weight multiplied by this distance, ये क्या होगा? What will this distance be? हाँ जी, ये distance क्या होगा? 1.4 minus 0.8, that is 0.6 meters. Weight into 0.6 meters is your clockwise movement. अच्छा जी, you have this force. This force F will generate an anti-clockwise moment. बताओ ये anti-clockwise moment किसके इक्वल होगा? Force F into the distance from the pivot to the force. That is 1.4. 1.4 F is your anti-clockwise moment. तो अब आप क्या लिख दोगे? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट. एंटी क्लॉकवाइज क्या है भाई? 1.4. एफ क्लॉकवाइज क्या है? W इंटू 0.6. वेट क्या है? 140. 1.4 एफ इज इक्वल टू 140 इंटू 0.6. कैलकुलेट एफ. F is equals to 140 into 0.6 divided by 1.4. F comes out to be 60 Newton. A is your answer. तो बेटा हमने यहाँ पे क्या किया? वी अज्यूम दैट दिस इज योर पिवट. वेट की फोर्स इज जनरेटिंग एन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. हाउ डिड आई कैलकुलेट दैट मूवमेंट? वेट लिया, डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट क्या हो गया? 1.4 माइनस 0.8, दैट इज 0.6 मीटर. देन यू टेक दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, दैट इज 1.4 मीटर्स. एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी आ गया. दोनों को इक्वेट कर दो, योर फोर्स कम्स आउट टू बी 60 न्यूटन. आगे बढ़ते हैं बेटा. A car is traveling around a circular track at constant speed as shown. In which direction is the resultant force on the car? हमेशा याद रखो, whenever your car is traveling in a circular direction, your resultant force is towards the center. B is your answer. ये देख लो. The diagram shows part of a hose used by a firefighter. 15 kg of water flows through the hose each second.
व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड टू द हॉर्स बाय द वाटर, हमने फोर्स निकालना है अप्लाइड टू द हॉर्स बाय द वाटर. फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम. बेटा चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. मास क्या है बेटा 15. हाउ विल यू कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल इज 6, इनिशियल इज 1, टाइम क्या है 1 सेकेंड. 15 into 5, your force comes out to be 75 Newton. B is your answer. आगे बढ़ते हैं. Brakes are used to slow down a moving car. Into which form of energy is most of the kinetic energy converted as the car slow down? बेटा जैसे जैसे कार स्लो डाउन हो रही है काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, थर्मल एनर्जी. सी इज योर आंसर. आगे बढ़ते हैं. एन ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 200 joules. A constant resultant force of 190 Newton is applied in the direction of its motion through a distance of 10 meters. बेटा देखो एक कार है जिसके पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी है 200 जूल्स की. आप इस कार पे फोर्स लगा रहे हो ऑफ 190 न्यूटन एंड यू आर अप्लाइंग दिस फोर्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स. ठीक है, तो आप कितना वर्क डन कर रहे हो कार पे. What is the work done that you are doing on the car? 190 into 10, that is 1900 joules. इतना एडिशनल वर्क डन बेटा आप कार पे कर रहे हो. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार ऑलरेडी. दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार. बेटा देखो आपकी कार के पास ऑलरेडी 200 जूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. You are adding further work done of 1900 joules. What will your final kinetic energy be? 1900 plus 200, that is 2100 joules. T is your answer. Question 10 को देख लेते हैं. Which statement describes what happens when the power of a machine is increased? Power का क्या formula होता है? Power is equals to energy over time. Okay, if you want to increase the power, आप क्या करोगे? If you want to increase the power, what can you do? You can increase the work done or the energy. Yeah, this is a suitable option. You can decrease the time as well. Can you realize power and time are inversely proportional? अगर आप time को decrease करोगे तो भी power increase होगी. 2 and 3 are correct. C is your option. Simple. Question 11 is not in your syllabus. Let's move ahead. Let's see question 12. A fixed mass of gas is trapped in a container. The temperature of the gas is increased, but the volume of the gas is kept constant. अच्छा जी, आप टेम्परेचर ऑफ द गैस को इंक्रीज कर रहे हो बट वॉल्यूम ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट. हाउ डज दिस चेंज इफेक्ट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ ईच कंटेनर. अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बेटा दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज. बी भी कैंसिल हो गया, टी भी कैंसिल हो गया. If the kinetic energy of your molecules is increasing, they will collide more frequently. Hence, the pressure will also increase. A is your answer. 13 पे आ जाओ. Which row correctly describes boiling and evaporation? Boiling में you can see bubbles. Evaporation occurs only at the surface. A is your answer. This thermometer is also not in our syllabus. For 2026, I am talking about. This question 15 is not on your syllabus. This syllabus is, I am talking with regards to syllabus of 2026. Thermometers are not in the syllabus of 2026. Okay, this is in your syllabus. 4 thermometers with their bulbs painted different colors are placed at equal distances from a radiant heater. Okay. So there are 4 thermometers that are painted differently. They are placed at a distance from a heater. Which thermometer shows the slowest temperature rise? कौन सा thermometer slowest temperature rise show करेगा? Do you remember shiny white objects are poor absorbers of heat? If shiny white surfaces are poor absorbers of heat, they will show the slowest temperature rise. आगे बढ़ते हैं. A wave produces 300 crest per minute. अच्छा जी. Oh, sorry, 3000 crest per minute.
You are producing 3000 cracks per minute, that is let's say 60 seconds. 60 सेकेंड्स में आप 3000 क्रैश प्रोड्यूस कर रहे हो बेटा, एक सेकंड में आप कितने क्रैश प्रोड्यूस करोगे? 3000 divided by 60, what will this come out to be? 3000 divided by 60, 50. 1 सेकंड में कितने क्रैश प्रोड्यूस कर रहे हो? 50 क्रैश. What will your frequency turn out to be? 50 hertz. Speed क्या है? 300. Can you calculate the wavelength? V is equals to f lambda. 300 is equals to 50 into lambda. Lambda comes out to be 300 divided by 50. That is equals to 6 meter. C is your answer. आगे बढ़ते हैं बेटा. The diagram shows two sets of wave fronts in a ripple tank. Okay. A student makes two statements about the wave. When the waves reflect from the barrier, the direction changes, but the wavelength remains the same. Yeah, this is correct. During reflection, आपकी wavelength remains the same. However, direction changes. Yeah, this is correct. Second statement देखते हैं. Uh, when the waves refract as they enter the shallow water, the direction remains same. This is wrong. During refraction, your direction also changes. This is wrong. Only statement 1 is correct. B is your answer. आगे बढ़ते हैं. A composite block is made by joining together three transparent materials. The diagram shows a ray of light passing through the composite block. ओके, ये मटेरियल 1 2 3 है और रे ऑफ लाइट इनके थ्रू पास कर रही है. परफेक्ट. नाउ which list gives three materials in order of speed of light in the material from slowest to fastest? Very easy if you start drawing normals. Very easy. अब यहाँ पे एक छोटा सा की पॉइंट लिख लो. First of all, draw a normal here. And write down two small key points. The further the light, the further the light bends away from the normal, the greater is the speed of light in that medium. बेटा जितनी ज्यादा आपकी लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी उतनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी इन दैट मीडियम. Can you realize if I make some angles here? Let's say this is your angle 1. Yes, तरह कह लो. Let's say this is your alpha 1. This is your alpha 2. This is your alpha 3. Can you see light is moving furthest apart from the normal in material 3? बेटा मटेरियल 3 में लाइट क्या कर रही है? नॉर्मल से सबसे ज्यादा अवे भाग रही है. दैट मीन्स मटेरियल 3 में लाइट की स्पीड फास्टेस्ट होगी. देर आर ओनली टू ऑप्शंस लाइक दिस, ए और सी. इफ यू फर्दर रियलाइज मटेरियल 2 में द लाइट इज वेरी क्लोज टू द नॉर्मल. That means in material 2 your light will be slowest. Material 3 में fastest. Material 1 में you will have mediocre speed. C is your answer. जितनी आपकी रे नॉर्मल से ज़्यादा दूर भाग रही है, the further your light is away from the normal, the greater is the speed of light in that medium. Just remember that. यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट जो है नॉर्मल से काफ़ी दूर भाग गई है. Hence why the speed of light in material 3 is the greatest. In material 2, your light is very close to the normal. That's why the speed is slowest. And in material 1, you have a mediocre distance between the normal and the light. That's why the speed is medium. C is your answer. आगे बढ़ते हैं. An object is placed 30 centimeter in front of a plane mirror. Let's say this is your object.
This is your plane mirror. This is the distance 30 centimeter, which describes the image of the object. हाँ जी, image यहाँ पे बनेगी बेटा. That is 30 centimeter from the mirror. Okay. The image is the same size and 30 centimeter from the object. No. The image is the same size and 60 centimeter from the object. That's correct. You can be 60 centimeter from the object. 30 centimeter here, 30 centimeter here. You can be 60 centimeters from the object and the same size. B is your answer. Which two angles represent the angle of incidence and angle of reflection? This is angle of incidence. This is angle of reflection. C is your answer. The speed of sound in air is 330 meters per second. How do the speed of sound in concrete and water compare with this speed? Concrete क्या है भाई, solid है. Water क्या है, liquid है. How do the speed of sound compare with solid and liquid? हाँ जी. How will the speed of sound compare with solid and liquid? Any ideas? The speed of sound will be greater in solids, greater in liquids. A is your answer. What is the speed of microwaves in air? 3 into 10 is the power of 8 meters per second. An observer finishes, an observer stands at the finish line of a 100-meter race. He wants to time the winner's run. He starts his stopwatch as soon as he sees the smoke from the starting gun instead of when he hears the bang. भाई आपका ये जो टाइमर, ये जो ऑब्जर्वर है, वो स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देता है as soon as he sees the smoke. Why? Because light travels much faster than sound. तो आपका चांस ऑफ एरर कम हो जाएगा. जैसे ही आप स्मोक देख रहे हो, आप स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दो. सिंपल. Which statement is not a method for magnetizing an iron bar? किस स्टेटमेंट से आप आयरन बार को मैग्नेटाइज नहीं कर सकते? प्लेसिंग ना, यू कैन डू मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन बार थ्रू दिस. हमने देखना है कौन सा मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर मैग्नेटाइजिंग. प्लेसिंग द बार इनसाइड अ सोलोनॉइड एंड स्विचिंग ऑन एन एसी करंट. नो. ऑल्टरनेटिंग करंट से तो कभी भी मैग्नेटाइजेशन नहीं होगी. बी इज योर आंसर. The diagram shows a circuit containing a variable resistor connected to a variable power supply. The table shows the current for different values of potential difference and the resistances. What is the order of current from smallest to largest? अच्छा जी, हमने करंट निकालना है from smallest to largest. How will we do that? V is equals to IR लगाते जाओ. Your initial voltage is 3.6. I1 निकालना है. Resistance क्या है? 12. 3.6 divided by 12 is equals to your I1. I1 निकालो, क्या आता है भाई? 3.6 divided by 12. Your I1 comes out to be 0.3 ampere. How will you calculate I2? I2 निकालो. 1.2 is equals to 12 into I2. 1.2 divided by 12 is equals to I2. ये आ गया 0.1 ampere is equals to your I2. Simple. Now 3.6 is equals to 6I3. 3.6 divided by 6 is equals to I3. What does your answer comes out to be? 0.6 ampere. So you have to go from the smallest to the largest. The smallest कौन सा हो गया? I2. Then I1, then I3. I2, I1 and I3. C is your answer to question number. कौन सा question है? 26. Let's check in the marking scheme as well. The answer to 26 is C. Yes. Which diagram shows the electric field pattern around a positive charge? Always remember, electric field lines emit out from the positive charge. A is your answer. A negatively charged plastic rod is placed above a positively charged plastic rod. ठीक है. What are the directions of electrostatic force on rod E and rod Q? बेटा, unlike charges हमेशा attract करते हैं. This will move to the downside. This will move to the upside. Electrostatic force on rod P क्या है? Downward. Electrostatic force on rod Q क्या है? Upward. B is your answer. अब आगे आ जाओ. A lamp rated 12 volts 2 ampere is switched on for 1 minute. How much energy is transferred by the lamp? Energy is equals to IVT. I क्या है? 2. Voltage क्या है? 12. Time क्या है? 1 minute. 1 minute multiplied by the 60 seconds in each minute.
What does your energy comes out to be? Energy is 1440 joules. D is your answer. आगे बढ़ते हैं बेटा. An alternating current power supply is connected in series with a resistor and a diode. अच्छा जी, ऑल्टरनेटिंग करंट पावर सप्लाई है जो कनेक्ट हुई हुई है विद द रेजिस्टर एंड अ डायोड. ओके. विच ग्राफ शोज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर विद टाइम. अच्छा जी, वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है फॉर द रेजिस्टर. हाउ विल वी डू दैट? वेरी इजी. नाउ ऑल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटीज चेंज होती रहती हैं बेटा. ऑल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटीज चेंज होती रहती हैं. व्हेन यू हैव अ पॉजिटिव पोलैरिटी हियर, this matches with the positive terminal of the diode. The current will flow. जब आपका यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, this matches with the positive terminal of the diode, the current will flow. You will have voltage like this. However, when the polarity switches, this becomes negative, this becomes positive. Can you realize this negative terminal is now connected with the positive terminal of the diode? You are in a reverse bias situation. रिवर्स बायस सिचुएशन में डायोड करंट फ्लो नहीं होने देता, वोल्टेज फ्लो नहीं होने देता. सी इज योर आंसर. लेट्स सी दिस. अच्छा जी, यू वांट अ रेजिस्टर विद द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस. सो यू हैव टू रिमेंबर टू की पॉइंट्स. Resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to diameter square. So if you want the largest resistance, you want the largest length. Largest length किसकी है? C या no? Largest length किसकी है? 17 and 17. Option A and C cancel out. If you want the largest resistance, you want the largest length, either this 17 or this 17. What about the diameter? Can you realize resistance and diameter are inversely proportional? If you want the largest resistance, your diameter should be the smallest. बेटा diameter जितना छोटा होगा resistance उतनी ही highest होगी. कोई छोटा diameter है along with large length? Yes, B is your answer. अच्छा जी. Which diagram shows a battery? Battery का symbol क्या होता है भाई? Battery का symbol is this. A fuse. Fuse का symbol क्या होता है sir? Like this. And a buzzer. Buzzer का symbol क्या होता है? Somewhat an inverted semicircle like this. Okay, any options? A cannot be your option. B is close enough but not your option. C cannot be your option. D is your option. This is your fuse. This is your buzzer. This is your battery. This is not in the syllabus for 2026. Let's see this. The diagram shows the transformer. Which row represents the material suitable for making the core and the primary coil? हमेशा याद रखो कोर किससे बनती है? आयरन से. ऑप्शन सी एंड डी कैंसल आउट. प्राइमरी कॉइल किससे बनती है? कॉपर से. ए इज योर आंसर. सिंपल. आगे बढ़ते हैं. द डायग्राम शोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ करंट कैरिंग वायर. ओके. whenever current is going out of the page, you have anti-clockwise magnetic field lines. बेटा जब भी आपका करंट आउट ऑफ द पेज जा रहा होता है, you have anti-clockwise magnetic field lines. A is correct. Whenever your current is going into the page, जब भी आपका करंट into the page जा रहा होता है, you have clockwise magnetic field lines. Which two options are correct? 1 and 3. D is your answer. आगे आ जाओ 36 पे. Which statement about electromagnetic induction is correct? A conductor moving parallel? No. The direction of induced EMF opposes the change causing it? Yeah, B is correct. A very important experiment, okay, increase scientists' understanding of the structure of matter. In this experiment, particles are scattered as they pass through a thin metal foil. Which particles are used and to which conclusion did the experiment lead? बेटा कौन से particles use किए थे हमने in this experiment? Alpha particles. This told us that the atoms have a very small nucleus. P is your answer. अच्छा जी, polonium PO has 84 proton number, 218 as your nucleon number. ठीक है. Which
By beta particle emission, which equation represents this decay? अच्छा जी, ऑप्शन ए और बी को तो फौरन से कैंसिल कर दो. Why do you cancel out option A and B? Because the proton number is never written at the top. Nucleon number is never written at the bottom. इनकी places switch होनी चाहिए. This is the correct representation of the atom. हमेशा न्यूक्लियॉन नंबर टॉप पे आएगा, प्रोटॉन नंबर बॉटम पे आएगा. Whenever you have a beta particle emission, your mass number remains unchanged. Proton number increases by 1. 84 से 85 हो गया. There is a beta emission. C is your answer. Let's further move ahead. The graph shows the count rate from a radioactive isotope that changes with time. You have to calculate the half-life of the isotope. बहुत easy है. First of all आपने यहाँ पे आना है and realize करना है what is the initial count rate. I think the initial count rate is 53. Sir, how do you know? You are going from 50 to 10. आप 10 counts cover कर रहे हो in 5 boxes. One box is equals to 2 counts. Initial क्या आ गया? 53. Perfect. अच्छा जी, आफ्टर वन हाफ लाइफ 53 को डिवाइड बाय 2 करो, क्या हो जाएगा? आफ्टर वन हाफ लाइफ व्हाट विल हैपन? दिस विल बिकम 26.5. अच्छा जी, 26.5 कहाँ होगा? दिस इज 26 somewhere here. What is this time taken? 2 days. Yeah, 2 seconds, sorry. The half life is 2 seconds. The time taken for your count rate to half is 2 seconds. Half life 2 seconds. Okay. What is the nature of alpha emission? Electromagnetic waves? No. Negatively charged particle? No. Positively charged particle? C is your answer. Simple as that. If you have any questions, you can ask right away. This marks the end of this paper.